बैंक में दो अकाउंट हैं तो वो 50-50 हज़ार रुपए दोनों से विड्रॉ कर सकता था विदाउट विदहोल्डिंग टैक्स एप्लीकेशन। नो, उन्होंने ये कहा जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है दैट विल बी दैट explanation has been inserted that 50,000 shall be aggregate cash withdrawal from all bank accounts in a single day. How to interpret all bank accounts? अगर एक इंडिविजुअल के एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके 4 अकाउंट्स हैं, 2 एक में हैं 2 एक में हैं, तो एक बैंक तो शायद अपना एक सिस्टम डेवलप कर पाएगा, लगा सकता है। क्या इसकी इंटेंशन यही है कि दैट लिमिट विल अप्लाई सेपरेटली टू ईच बैंक और ऑन एग्रीगेट बेसिस टू ऑल बैंक अकाउंट्स? इसके लिए अनलेस अगर इंटेंशन ये है कि तमाम बैंक अकाउंट तमाम बैंक्स में इसको एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए सिस्टम मैं नहीं समझता कि अभी तो फॉर द टाइम है। उसके लिए आई थिंक बैंक स्टेट बैंक और बैंकिंग काउंसिल को कोई सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल इन द केस ऑफ अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो सेम अमेंडमेंट है, इट इज प्रपोज्ड टू इंसर्ट एन identical explanation as in the case of cash withdrawal to 50% of 50,000 rupees. Private motor vehicle registration authority has been now required कि वो नॉन फाइलर से रजिस्ट्रेशन के वक्त लीजिंग के ऊपर 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट करेंगे। Exemption from collection of tax on import subject to audit. Exemption shall be subject to the tax audit under section 2(1)(c). अभी क्या था कि अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे यूज टू हैव द एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। अब उसके लिए कंडीशन ये हो गई है कि दैट प्रोसीडिंग विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू अ टैक्स ऑडिट, और in order to follow the present accounts or documents shall result in collection of tax and recovery of tax collected under section 148. I think in my opinion this is basically a double jeopardy for the taxpayer. अगर एक taxpayer का otherwise tax audit होता है तो ये aspect वहाँ पे भी cover किया जा सकता है और उसको वहीं पे cover होना चाहिए rather than a separate tax audit for the withholding tax purposes. Adjustable withholding tax has been proposed to be collected by insurance company or its agent from the non-filers at 4% in case of general insurance premium, 1% in case of life insurance premium exceeding 200,000 rupees per month. Provincial revenue authorities now have been required to collect adjustable advance tax at the rate of 3% of turnover from non-filer registered persons with provincial sales tax authority along with sales tax return filed with such authority. अगर नॉन फाइलर्स को FBR फाइलर नहीं बना सका तो अब उसको आप SRB को कहने कि जी वहाँ पे भी एक एडिशनल टैक्स वो उनसे ले। That's why I said in the beginning कि इसमें स्ट्रेटजी इस प्रपोजल में हमें कम नज़र आ रही है या कोई प्लानिंग कम नज़र आ रही है। सिर्फ कलेक्शन एंड ऑफ टैक्सेस के ऊपर जिस तरह भी स्क्वीज किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, दैट इज देयर। नाउ आई विल क्लोज माय प्रेजेंटेशन विद दिस के भी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ईयर्स टू ईयर्स, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द ICAP एंड फ्रॉम अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ऑल्सो, all have suggested कि भाई टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए रादर देन रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर की बजाय टैक्स बेस बढ़ाने के लिए और नंबर ऑफ टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर फोकस होना चाहिए। वी हैव बीन सजेस्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम कि भी इम्यूनिटी फ्रॉम दी जो फॉरेन रेमिटेंसेस है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको सर्टेन कंडीशंस के साथ सिर्फ एप्लीकेबल होनी चाहिए, नॉट फ्री फॉर ऑल। और रीवैपिंग ऑफ फाइनल टैक्स रिजीम, ICAP की प्रपोजल हमेशा से ये रही है कि फिक्स टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम को ख़त्म करके तमाम टैक्स पेयर्स अक्रॉस द बोर्ड, ऑल क्लासेस ऑफ इनकम शुड बी पेइंग टैक्सेस ऑन नेट इनकम बेसिस। लेकिन हो ये रहा, आप देख ही रहे हैं कि रिवर्स में चीज़ें जा रही हैं कि FTR मज़ीद आगे बढ़ रहा है।
बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट, अभी उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा. डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स बाय पाकिस्तानी रेजिडेंट्स अब्रॉड, जो मतलब ये टॉक ऑफ द डे है, पानामा लीक्स, इसके ऊपर आई थिंक देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि भी गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड. और हम फैसिलिटेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट देयर शुड बी सम विंडो प्रोवाइडेड टू द बोनाफाइड पीपल के जिनकी लेजिटिमेट इनकम थी और वो फॉर रीजंस, मतलब ये है कि दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान, तो उसके लिए कोई ना कोई स्कीम लाने की ज़रूरत है. दैट आई थिंक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ICAP वी हैव बीन सेइंग. रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स, अदनान ने अपने प्रेजेंटेशन में इसको कवर भी किया है. Abolish of presenting and value-added fixed tax schemes in sales tax and the formulation of policy board. ICAP पिछले 4-5 साल से have been propagating कि FBR में एक policy board होना चाहिए जहाँ जो कि budget making exercise should be run through that board. But unfortunately that has not. So with this I close my presentation. Thank you very much. As per plan, we have now a panel discussion which includes Mr. Shabbar Zaidi, who is the ex-president of ICAP and a partner in A. Ferguson's company. Mr. Rashid Ibrahim, who will moderate the session. He is a chairman of the tax committee of the institute, and he will actually be the moderator for the session, including Mr. Asad Ali Shah from the managing partner Deloitte, and also we have Mr. Haider Ali Patel, a partner of tax in E&Y. I think just we'll take a little while to set up the tables for the discussion, and then we can have the discussion started. I think first I will be inviting Mr. Rashid Ibrahim to take charge of the discussion from now. Mr. Rashid Ibrahim is our Vice President of the Institute, previous Vice President of the Institute, and also a member of the Council and the Chairman of our Tax Committee. Mr. Rashid Ibrahim, please come on stage. And we'll now invite Mr. Shabbar Zaidi to also join the panel. Mr. Asad Ali Shah, Haider Patel, Mr. Haider Patel, Mr. Shakib Shiradi, who is our guest today as well, he is the Chief Executive of the Atlas Honda Pakistan Limited, and very kindly accepted our offer to be the panelist. Most important person. So, Rashid Saab, I will now leave the discussion to you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I've been actually attending seminars in Islamabad and Lahore, but the kind of interest that I have seen here is tremendous, actually. And this is why we say that Karachi is the economic heart of the country. It is really amazing, actually. This is the first time that I'm here and attending this seminar. A substantial exercise actually was carried by FPR during the year by arranging consultative sessions on the proposal received from around the country. ICAP also, after obtaining suggestions from members and detailed deliberations among the members of the Taxation Committee, submitted its proposals, and it is for the first time that a discussion was held in FPR with Mr. Harun Akhtar and Mr. Rahmatullah Wazir and other officials of FPR for about 3 hours, where we explained our proposals and which were appreciated by FPR. 3 pre-budget seminars were held in Islamabad, Karachi, and Lahore, and a press conference was also arranged in Islamabad to push our proposals. Much awaited report by Masood Ali Naqvi Saab of Tax Reforms Commission was also submitted to FPR during the year. However, all these efforts were not enough to convince the government to take some bold steps, and the routine budget and amendments in revenue laws are proposed through Finance Bill 2009
this probably was the right time for the government actually presenting its fourth budget to make some bold initiatives, but we were not able to actually have that in place. We have heard two very effective presentations from Mr. Saqib Masood and Adnan Mufti. Now we would like to hear something from the panelists. We would, very capable panelists are with us. But to start with, I would now request Mr. Saqib Shirazi to give his view on the overall budget. I think rather than go into the tax micro issues and try to find holes in what could have been done and what should have been done, I think from a business community perspective, sabse pehle, I think it's important to go back to 50,000 feet and first look at what's happened and try to be in the head of the finance minister and his team, and then try to come back, why do we continue to fail to convince them that certain aspects need to be addressed while others are, and what we think are important never seem to be. So there's something obviously wrong with the paradigm. And he's not the first finance minister or the first team of FPR with whom we as a business community interact and come away at the end of an exercise with things that we wished had taken place and didn't. But first of all, I think what's important is what has happened this time round which augurs slightly more positively. Number one is to achieve a revenue of over 3 trillion. I think it's absolutely unique and it's fantastic. It's been achieved. So where credit should be given is due should be actually be given. That despite global commodity prices coming down, despite exports not being where they should have been, despite the economic activity being very different 12 months ago to today, the fact that they've still managed to get 3 trillion in the kitty is remarkable. Some people will say that that's because the same people who were in the net before are being taxed more. Yes, true. Absolutely true. But agar unke point of view se dekhein, so achieving more than 20% growth in the revenue number, they would like to be loaded for that. Okay, dekhein ji, despite all this, we've done this much. So I think, first of all, let's give it to them. Okay, that's fine. I think they should be given that much credit. Number two, aa gaya, if they do achieve this number, for the first time in a long time, we would have got 10% of GDP in terms of tax. I think that, again, is a figure that my colleagues on the panel have been saying for a long time. 9.5% pe baitha hua hai, 10% pe nahi aa raha. So my view is that that's also something that should be lauded. Ab aa jati hai baat ki as the world changed in the last year, what did our government do positively in order to encourage positive sentiment? Let's look at that. Kahan world thi takriban $80 से $100 oil pe, और kahan metals the, और kahan aaj आई है. Average, our oil has been at about $40. Aaj it crossed $50 again. So maybe this window won't last for very long. But jab oil कीमत गिरी hai, and globally there has been deflation, it was very hard for any country to perform well economically. And I think in that context, Pakistan's actually done very well. Okay, we've actually done in the global economies, apart from our neighbor India, perhaps China, Pakistan is amongst those countries that is actually being talked about globally right now. कि यार 200 million लोग रहते हैं, बड़ी market हो गई है. They're not talking, when they talk about Pakistan now, as much about कि हमारे neighborhood में negativity क्या है और etc. क्या है. What they are talking about is कि इस market में potential है. तो जहाँ global slump आया, हमारी economy ने इतना बुरा perform नहीं किया जितना शायद हम समझ रहे थे. लेकिन अगर
आपके मिनी बजट्स ना होते, हमारा रेवेन्यू शायद और भी नीचे गिर जाता, हमारे पास फिस्कल स्पेस ना होती। तो अगर मैं उनकी जगह पे हूं फॉर अ सेकंड एंड फॉरगेट व्हाट आई डिड एंड हु आई टैक्स्ड, आई हैव एक्चुअली डन वेरी वेल। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ऑयल प्राइस गिर रही है, तो मैंने ये देखा कि कल को ऑयल प्राइस बढ़ भी सकती है। तो जिस तरह इंग्लैंड में, यूके में, द टैक्स ऑन पेट्रोल इज ओवर 100%. America has a different policy. India also has a tax which is very high. Compared to that, our fee liter petrol tax, etc., was much lower as a percentage. तो मिनी बजट्स करके सबसे ज्यादा टैक्स कहां से उन्होंने एडजस्ट किया? तेल की प्राइस से। तो उन्होंने एक एक्शन ये लिया, और दूसरा एक्शन उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर क्या लिया? उन्होंने इंश्योर किया कि यार जहां जहां से आज कोई बंदा दे सकता है उस पर 1% और लगा दो, तो कस्टम ड्यूटी पे लगा दो, एटसेट्रा पे डाल दो। लेकिन इफ आई एम इन हिज पोजिशन फॉर अ सेकंड, तो आई वुड से आई हैव डन वेरी वेल टू क्रिएट ए बजट डेफिसिट फिस्कल स्पेस दैट द इकोनॉमी नीडेड। तो शायद मैं यूं सोचूं कि ये शॉर्ट टर्म पेन थी, लेकिन मैंने स्टेबलाइज कर दी इकोनॉमी, और अब अगले 2 साल मैं इसको ग्रोथ की तरफ लेके जाता हूं। तो अब तक अगर मैं ये 3 पॉइंट सामने रखूं, तो माय व्यू इज दैट दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स दैट एज बिजनेस कम्युनिटी शायद हम बातें करते नहीं हैं, लेकिन जब अपनी बिजनेस प्लानिंग और ग्रोथ को देख रहे होते हैं, वी डू टेक दीज इनटू अकाउंट कि यार इट्स नॉट एज बैड एज इट कुड हैव बीन। नाउ व्हाट कुड बी बेटर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और शायद हमें और उनको भी ये फीडबैक लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेहतर हो सकती थी, जो नहीं हुई, आई एम सॉरी नकवी साहब आप बैठे हैं इधर, मेरा ये व्यू है कि बहुत मीटिंग्स होती हैं प्री बजट,